द मेल्स, उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। जो ब्रेस्ट कॉस्मेटिक सर्जरी करते हैं, ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरीज के स्पेशली एंड गायनेकोमास्टिया, उनमें व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसिजन्स and how are they relevant, how to choose between the different types of incisions. So first, in women jab when we do the breast implant surgery, what are the different types of incisions that we do? So the most common incision is the incision which is given just below the breast here. We draw a midline in the breast, and then very good evening to everyone. Preet, good evening. A very good evening to you. Hi, good evening, Dr. Tabi. Hope you are doing wonderful. And then we give the incision here. The incision is only about 3 to 3.5 centimeters, and then we put the implant through this. The other incision is for those ladies who don't want a scar on the breast. So unme hum log areola pe incision lagate, not here, and put the implant through that. And the third is the axillary incision. Yahan pe line, axillary ki line mein incision deke, and then we put the implant from there. So the purpose of this video is to define the differences. How do you choose which is which? So if there's any patient जिनको चाहिए कि उनकी breast पे निशान ना आए, they don't want, so sometimes religious reasons भी होते हैं या their personal choice, they don't want people to know कि उनका breast implant surgery हुई है, then the best option is to go for areola incision or the axillary incision. But 95% of all surgeries are done through the inframammary approach, the most common approach है. The reason for that is कि वहाँ से you can see the entire breast from inside. You can do the dual plane technique also, जो कि dual plane technique otherwise cannot be done with the areolar or this approach. So you can do the dual plane as well. You can do the inframammary strengthening. The IMF, there is a layer here जिसको अगर हमने strengthen नहीं किया तो long term results अच्छे नहीं आते हैं. So you can strengthen that through this approach, otherwise it is impossible. Especially axillary approach, it is impossible to do that. So axillary approach से dual plane नहीं कर सकते, axillary approach से below the muscle जाना is extremely difficult. So जो inframammary approach, it gives you the flexibility to choose different options like different planes and IMF strengthening. And today we recommend IMF strengthening in every patient. So anybody who's doing a breast implant, आप suppose मेरे साथ नहीं कर रहे हैं, कहीं और से plan out कर रहे हैं, अपने डॉक्टर से प्लीज पूछिए. मेक श्योर यू टॉक टू योर डॉक्टर. आस्क देम, आर यू डूइंग द इंटरनल ब्रा टेक्निक? इंटरनल ब्रा टेक्निक कैन बी डन विद द मेश और विदाउट द मेश. आर यू डूइंग द इंटरनल ब्रा टेक्निक? अगर नहीं कर रहे हैं, आई विल नॉट से कि आप डॉक्टर चेंज कर लीजिए, बट जस्ट इवेल्युएट. डोंट यू वांट टू डू व्हाट इज रेकमेंडेड टुडे, या पुरानी नॉलेज पे काम करना चाहते हैं? सो व्हाट इज रेकमेंडेड इज दिस, that do the internal bra technique either with mesh or with धागे sutures. अगर आप वो करते हैं तो आपको longer term results मिलते हैं, your results stay much longer. तो मैं आपकी जगह patient हूँ तो I would obviously want कि जो आज new procedures are there, we would definitely want to do that. So for all the ladies, these are the three incisions. The worst, सबसे खराब जो incision है in this in terms of the results is the axillary approach. अगर हम यहाँ से करते हैं, this is the worst approach because breast की asymmetry है तो we cannot correct. Also यहाँ से इम्प्लांट को पूरा नीचे सेट करना इज वर्चुअली इम्पॉसिबल. इट्स वेरी फार अवे एंड टू पुश द इम्प्लांट राइट डाउन इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट. इंटरमीडिएट इंफ्रामैमरी जो एरियोला अप्रोच है, इट्स इंटरमीडिएट, गिव्स मोस्ट बेनिफिट्स. यू आर एबल टू प्लेस द इम्प्लांट प्रॉपर्ली, स्पेस अच्छी बन पाती है, बट डुअल प्लेन नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टू डू इट. And the best, most direct approach is the inframammary approach, which is the one that I recommend, जो मैं हर पेशेंट को recommend करता हूँ. प्लीज़ अगर आपकी questions हैं या आप अगर live discussion मेरे साथ करना चाहते हो of any topic, मेरे साथ Instagram पे आ सकते हैं, प्लास्टिक सर्जन अमित गुप्ता. You can join me there, send me a request for video, अपना question post कर सकते हैं, and you can post your question, I can take you live. ऐसे करते हैं. नजर नहीं, I mean hardly 5% patients में even दिखता है कि कुछ किया हुआ है, has something been done. Otherwise in the majority, largest majority, 95% patients who can't see the incision. Then there are other incisions. There's some doctors who prefer to give single cut here. I don't prefer it because उस कट से आप सारे के सारे चेस्ट को टैकल नहीं कर सकते. You cannot tackle this because instrument is straight, instrument गोल घूम that incision, and you can clearly see the scar in 100% of patients. Forget दूसरी टेक्निक्स में तो दिखता ही नहीं, बट इस टेक्निक में 100% पेशेंट्स में यहाँ पे स्कार नजर आएगा.
थर्ड निपल के थ्रू करते हैं, उसमें पर्सनली आई बिलीव कि निपल के थ्रू इंसिजन, सिंगल इंसिजन से आप कंप्लीट सर्जरी नहीं कर सकते हो. इनवेरिएबली देयर विल बी सम एरियाज जहाँ पे थोड़ी सी रेगुलरिटी रहेगी. एंड बेसिकली व्हाट आर वी ट्राइंग, अगर वाई मेक लाइफ मोर डिफिकल्ट अपनी ज़िंदगी को, and this would influence them in their choice for doing this procedure. So of course if you want to get in touch with me, आप in fact अभी भी मेरे साथ आ सकते हैं Instagram पे, but otherwise you can connect with my team, बात कर लेगी. So last 10 seconds, any questions anybody has, you can post it on the chat right now, या फिर आप मुझे मेरी डायरेक्ट मैसेज करके मुझसे आप डिस्कस भी कर सकते हैं. Someone is saying 45 kgs weight loss. Yes, of course, अगर आपको 45 kg weight loss हुआ है, then you should go for body contouring because इतनी skin lose हो चुकी होगी. Then you can actually do a belt lipectomy now and get a flat tummy. You can do other procedures also. It depends, right? Great. So have a wonderful day. Diwali week is there, and this is period जहाँ पे generally एक माहौल ही अलग होता है. आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी से मिलेंगे, there's lot more happiness compared to the other days in the year, and meeting people is a great event in these run up to the Diwali festival. So I wish you a very very happy Diwali week abhi, and please enjoy.